Namaste. We are here to discuss how we look at various questions we come across in our life, in our daily life. We'll try to contemplate in Hindi or English, or I'll mix those. So those who understand English and Hindi would enjoy this. A lot of my friends have told me I speak mostly in Marathi. Sometimes the Marathi is beyond understanding. Marathi हमें समझ नहीं आती है, तो हम हिंदी में बात करें या अंग्रेजी में बात करें. With great luck, I had two grandfathers, mother's father and father's father, who were both good at all three languages, Marathi, Hindi, and English. I studied all three languages in the school as subjects. So I went through the grammar, literature, composition in all three languages. And I learned those rules fairly well, I would say. Learning a language in school as a subject, well, doing well on those subjects on the exams, and being able to express well while speaking or while writing may not necessarily come together. So don't assume that I can say everything as clearly as some other people might be able to. All I can promise you is whatever I say will come from my heart and will be based on either personal experience or contemplation. तो गीता का सफर जो है, सफर इन हिंदी, नॉट इन इंग्लिश. गीता की यात्रा मेरे जीवन में कैसे शुरू हुई. As a young boy, I used to listen to Gita. My grandfather used to recite, my father's father. I was very young. This was told to me by my father and grandfather. My grandfathers tried to study the Gita by heart. He wanted to be able to recite the Gita, all of its verses, from the beginning all the way to the end. And he was learning all the verses by heart. वो श्लोक सारे याद करने की कोशिश कर रहे थे जब मैं छोटा था. तब वो होंगे करीब 65 साल के या उससे भी ज्यादा. तो उनका ये चल रहा था कार्यक्रम. वो कैसा करते थे कि ही वुड रिसाइट वन श्लोक, उसको याद करते थे, और फिर दूसरे दिन दूसरा श्लोक कहते थे और दोनों एक साथ कहते थे. फिर तीसरा श्लोक कहते थे और फिर तीनों एक साथ कहते थे. इस प्रकार से वो एक एक श्लोक करते हुए, एक एक दिन एक एक श्लोक ऐसा करते हुए उन्होंने करीब 16 अध्याय याद कर लिए थे. 16 अध्याय के सारे श्लोक एक एक करके. And this was his practice. So every day he would recite all the shlok he had memorized until then. तो एक दिन क्या हो गया कि उनकी ये रेसिटेशन में कहीं वो अटक गए. उनको याद नहीं आया उसके आगे वाला श्लोक. और मैं हर रोज सुनता था वो श्लोक. तो उस श्लोक को इस छोटे से बच्चे ने कह दिया. तो संस्कार कैसे होते हैं देखो, कि अगर हम कुछ सुनेंगे ना, इफ वी कीप ऑन लिसनिंग टू समथिंग ओवर एंड ओवर एंड ओवर, वी विल मेमोराइज इट. अभी सुनो, हम लोग फिल्मों के गाने सुनते हैं ना. याद करो, हमारे बचपन के कुछ गाने होंगे फिल्मों के, वो अभी तक हमको याद है, क्योंकि उनको हमने कितनी बार सुना. तो सुनते सुनते उन गानों का संस्कार हमारे मन पर हो गया. उसी प्रकार से गीता के श्लोकों का संस्कार मेरे मन पे हो गया था उस समय. बाद में मैं वो सब भूल गया. पर जब मैं याद कर सकता था, उस समय हमारे दादाजी ने मुझे 12वां अध्याय, 15वां अध्याय और दूसरे अध्याय के जो
अंतिम 19 श्लोक है, वो सारे याद करवाए थे. सो दीज 59 श्लोक, 12 और 15 में 20-20 श्लोक है. सो दे आर द शॉर्टेस्ट अध्याय, सबसे छोटे अध्याय हैं गीता में. तो वो 40 श्लोक, 12 अध्याय के, 12वें अध्याय के 20, 15वें अध्याय के 20, और उसके बाद 19 श्लोक दूसरे अध्याय के. तो ये जो 19 श्लोक है ना दूसरे अध्याय के अंत में, ये हैं स्थित प्रज्ञ के लक्षण. सो दीज 59 वर्सेस टोटल आई हैड मेमोराइज्ड व्हेन आई वाज अबाउट 5, 6, 7 years old. ठीक है ना. उसके बाद में व्हेन आई वेंट टू मिडिल स्कूल एंड आई बिकेम ए टीनेजर, उसके बाद में लाइक एवरी अदर टीनेजर, जो बताया जाता है हमको वो हम कुछ नहीं करते, वो सब भूल जाते हैं. जो हमको अच्छा लगता है वही करते हैं. सो यू आर पेरेंट्स ऑफ टीनेजर्स, आई हैव ऑल्सो बीन ए पेरेंट ऑफ ए टीनेजर. तो टीनेजर्स को कुछ सिखा नहीं सकते हम, उनको हमको सिर्फ इंस्पायर करना होता है. वो अगर इंस्पायर हो गए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं हुए तो ठीक है. इट्स नॉट दैट आई वाज नॉट इंस्पायर्ड टू रिसाइट द गीता. उसका अर्थ मुझे तब भी नहीं पता था, और बाद में भी कई दिन तक पता नहीं था. फिर से मेरी जब भेंट हुई गीता के साथ, एट दैट टाइम आई वाज इन कॉलेज, तब मैंने विनोबा के गीता प्रवचन पढ़े, और वो पढ़ करके मुझे इतने अच्छे लगे. दे वेर translated by Sane Guruji. Vinoba was about 35, 36 years old at that time. He was imprisoned in the central jail of Dhule in Maharashtra. The political prisoners in British jails used to have relatively greater freedom than other criminals who would be in jails at that time. So it was decided by the political prisoners that Vinoba would speak about the Gita every Sunday, Sunday school, in the jail. The jail authorities also accepted this request because the jailer himself wanted to learn the Gita from Vinoba, because he had heard Vinoba was a great scholar. Vinoba used to know 16, 17, 18 languages. During my childhood, one of my friends told me, said, Vinoba used to know 18 languages and he could remain moan or silent in all 18 of them. I said, great, wonderful. What a great discovery. Vinoba was the spiritual guru for Mahatma Gandhi. So whenever Mahatma Gandhi used to have any spiritual question or doubt regarding anything he was reading, he would consult with Vinoba. And Vinoba was Gandhi's Pratham Satyagrahi, the first Satyagrahi. So they were good friends as well as each other's disciples in different fields. We are not going into that aspect. We are still going to stick to Gita. So Vinoba started talking about the Gita every Sunday in Dhule in 1932. With great luck and divine grace, this whole bunch of Sunday school students and this great teacher were together for 18 weeks. So all 18 chapters were covered during this entire stay. One of the attendees was Sane Guruji, who was a great Marathi writer. He wrote many wonderful Marathi stories. And he had phenomenal control over Marathi language. And his Marathi language was almost like poetry. His prose was like a poetry. It was beautiful. When I read those Gita Pravachan, many times I used to cry. They were so nicely written. And the language was so emotional and emotionally powerful.
Even then, I should not say that I understood the core message of Gita. The core message of Gita, according to Vinoba, he says there are three fundamental things Gita wants to teach us. Number one, our assumption that we are this body is to be negated. Our essential nature as the eternal and infinite Atma has to be established. And the third thing is we should all be bound by our Swadharma. Each of us is bound by our own Swadharma, which changes from time to time, from place to place. So the Swadharma depends upon our position in life as well as our position in the society. That Swadharma is obvious to us. Swadharma means what we should do in any given situation or at a given time or in a given society. That Swadharma is sacrosanct for all of us. So these three things we have to learn from the Gita. As I studied Gita, translated by many other scholars as well as commentators, some spiritually oriented, some purely from a language point of view, I realized Gita could be looked at by each one of us with our own perspective, with our own bias. That is exactly how everything happens in our life. So when we look at anything in our life, look at any situation, look at any person, look at any book, look at any subject, we look at it from our perspective. The example I like to give is, say I'm going to show you a bottle here. Yeah, I have this bottle in which I keep cloves. So cloves are good for the throat. So you keep cloves in your mouth and the juice will keep getting secreted and keep your throat moist and also disinfected, because cloves have a compound that will disinfect the throat, which means if there are any viruses and things like that, they will be killed by this clove juice. So if you look at this bottle from the front, it looks like a rectangle, correct? But if you look at this same bottle from the top, like this, it will look like a circle. So whenever we look at anything from our own perspective, it will appear to us quite unique. So our perspective is correct from our viewpoint, but somebody else's perspective from their viewpoint may also be correct. So Vinoba in his pravachan, in his discourses, as mentioned at one place, he says, "Me ही सिद्धांत मानना रहे." So I am a believer of ही सिद्धांत. यह भी है या भी सिद्धांत in Hindi, or also सिद्धांत in English. In English it would say this is also true and that is also true. As long as we are looking at truth as apart from us, the truth will appear to us different from our own unique perspective. And what is the truth? Truth is something which we experience from within whenever we contemplate on something. So, if I'm looking at this particular object, I'm observing this object from with my eyes. If I open it, then I can smell it. I can, of course, taste it. I can touch it and I can hear it.
Okay. So we perceive the world through these five sensations. And once these five sensations are experienced by us, we compare those sensations with all the previous sensations we might have experienced in the past. Then we compare the current experience of these five sensations with those sensations we have experienced, and we'll deduce or we will infer that this means that. That's how we perceive the world. But then, until that whole thing is internalized, we don't really know what it is. Knowledge of the other, knowledge of anything and everything we consider as the other is obtained in this manner. Knowledge of everything we consider as the other, हम जिसको हमसे अन्य मानते हैं, उसका ज्ञान हमें हमारे 5 इंद्रियों के मार्फत, थ्रू द 5 सेंसेस, सेंस ऑर्गन्स, हमारे मन में संवेदनाओं के रूप में होता है. We learn about the world through our sense organs as 5 sensations. Unless we get these sensations, for us, the outside world doesn't exist. Didi was asking me before we started this, she would like me to talk about consciousness is one. I'm getting there. I have built up this whole story in which my childhood, my grandparents, Vinoba were all a part of the story. And Vinoba's 3 fundamental principles of Gita, that I'm Atma. Atma means my essence. Atma, the word Atma itself means essence of anything. Just think when we say या बाटलीचा आत्मा क्या है, इस बोतल का आत्मा क्या है, या फिर लवंग का आत्मा क्या है, मीन्स what is the essence of that particular thing. So आत्मा means the essence. तो मेरा जो essence है, my own essence, that essence is actually conscious. It's conscious. हमारा जो essence है ना, हमारा अपना होना, इसके जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गुण हैं, 3 गुण, अगर इसके बारे में हमने सोचा तो, हमारा अपना जो होना होता है ना, वो हमेशा होता है. वी ऑलवेज आर. सो वी ऑलवेज एग्जिस्ट. हमें हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में आज तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं आया हमारे मन में. वी हैव नेवर डाउटेड आवर ओन एग्जिस्टेंस. इनफैक्ट दैट इज द ओनली थिंग वी कैन ऑलवेज बी श्योर अबाउट. ओनली थिंग आई कैन ऑलवेज बी श्योर अबाउट माई बीइंग. आई मे हैव डाउट अबाउट एवरीथिंग एल्स. जिसको मैं मुझसे अन्य के बारे में अन्य है ऐसा जानता हूं, उसके बारे में मेरे मन में संदेह हो सकता है कि यह है या नहीं है. संदेह नहीं, कभी कभी वो हो सकता है या नहीं भी हो सकता है. जिस प्रकार से अभी आप सब लोग मेरे पास हो, मेरे साथ हो, ये सुन रहे हो, पर ये जब हमारा सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद आप लोग चले जाओगे तो नहीं होंगे. सो आइदर यू आर और यू आर नॉट, डिपेंडिंग अपॉन वेदर वी आर इन दिस वर्चुअल सेशन और नॉट. करेक्ट. तो पर मैं तो रहूंगा. मैं इस सेशन से पहले भी था, अभी भी हूँ और बाद में भी रहने वाला हूँ. सो अबाउट माई ओन बीइंग देयर इज नो डाउट. दूसरा ऐसा है कि हमारे अपने होने के बारे में वी आर अवेयर. आई एम अवेयर. आई एम. एम आई नॉट अवेयर? आई एम. हैव आई एवर बीन इन डाउट whether I am? Have I ever not known I am? I've always known I am. So I exist and I know I exist. With anything else, we will see something and we know it exists, and it can happen in sequence. So first we may see something and then we will know it exists. But about our own self,
We are and we exist, that happens at the same time. I know I am, and I know I am. It happens simultaneously. The third aspect of our own being is we always want to be and we always want to know about everything. So we always want to be, so we never not want to be. है ना, ये फंडामेंटल है हमारे बारे में. एंड वी ऑलवेज वांट टू नो, वी वांट टू नो अबाउट इवन थिंग्स दैट वी शुड नॉट रियली केयर अबाउट. उसके बारे में हमको पता होना चाहिए, ऐसा हमें लगता है. वी आर क्यूरियस बाय नेचर. सो वी वांट टू ऑलवेज बी, वी ऑलवेज वांट टू नो. ऑलवेज, व्हाई डू वी वांट टू बी एंड व्हाई डू वी वांट टू नो? सोचो इसके बारे में. बिकॉज इफ वी आर नॉट, then we will not be happy, and if we don't know, then we will not be happy either. तो हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हम रहें, वी शुड ऑलवेज बी. और हमें ऐसा भी लगता है कि हमें सब कुछ पता होना चाहिए, वी ऑलवेज शुड नो. बिकॉज बाय बीइंग एंड बाय नोइंग आई एम हैप्पी. So what is the pursuit? The pursuit is I always want to be happy. So these are the three fundamental pursuits we have. I always want to be, I always want to know, and I always want to be happy. And the only way I will be happy is I always am and I always know. तो ये awareness जो है ना, the faculty or the property or the characteristic of knowing, that is awareness. This awareness always is. हम जब तक हमें अपने आप को, हम अपने आप को जब तक लिमिटेड समझते हैं ना, सो द कॉमन assumption is I am this body. So I am limited by my body, which is an object. I consider myself to be limited in time. I limit myself by the beginning of this body, and I assume that I will not be when the body perishes. तो जन्म से, इस देह के जन्म से इस देह के अंत तक काल में मैंने आपको, अपने आप को नाप रखा हुआ है. सो आई हैव लिमिटेड माई सेल्फ, आई हैव measured myself in time. I have measured myself as an object, as this body. ये इस शरीर का वजन जो है वो 65-70 किलो है, ऑब्जेक्ट. एंड देन आई हैव लिमिटेड माई सेल्फ और आई हैव मेजर्ड माई सेल्फ इन स्पेस. ये जो शरीर है ना, ये 2 फुट चौड़ा है और 5.5-6 फुट लंबा है. इस प्रकार से हम अपने आप को इन तीनों में नाप लेते हैं. इसको संस्कृत में कहते हैं मान. मान मीन्स मेजरमेंट. तो हमने अपने आप को देश, काल और वस्तु में नाप लिया है. So we have measured ourselves or limited ourselves in these three based on the assumption that I am this body. इसलिए हमको ऐसा लगता है कि जिस दिन इस शरीर का जन्म हुआ था, जिस दिन ये शरीर हमारी माँ के पेट से बाहर निकला था, उस दिन हमारा जन्म हुआ. उसके बाद से हम लोग अब तक बढ़ रहे हैं, वी हैव बीन ग्रोइंग. और फिर उसके बाद हम लोग एक दिन इस शरीर को छोड़ के चले जाएंगे, तो तब हम मर जाएंगे. इस प्रकार से हम सोचते हैं, पर हमने ये कभी सोचा ही नहीं है. वी हैव नेवर रियली थॉट कि इन सारे परिवर्तनों को हम साक्षी भाव से देखते आए हैं अब तक. और जो साक्षी है इन सारे परिवर्तनों को देखने वाला, उस साक्षी में कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है. सो द फर्स्ट थिंग वी वांट टू लर्न फ्रॉम द गीता इज वी आर द observer, or I am the observer who is observing all these changes in my own body as well as in the world. The only way I can experience changes in the world is if I am standing at a place that is not moving. समझ में आ रहा है? देखो, हम अगर
एक जगह पर स्थिर खड़े होंगे, तब हमें परिवर्तन का अनुभव होगा. सो वी विल experience the change if we are standing at a change less location. होता क्या है कि if we have paid attention or if we have focused our attention to the moving object, then it appears to us that we are moving. जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त कैसे होता है, सोचो. The sun rises in the morning in the east, and then eventually it appears to travel in the sky and it appears to set in the west. ऐसा हमें हर रोज अनुभव होता है. एवरी डे वी हैव द सेम एक्सपीरियंस. तो पहले पहले तो हमको ऐसा लगता है कि सूरज आसमान में ऊपर चढ़ रहा है और फिर आसमान में ही नीचे पश्चिम की दिशा में डूब रहा है. उसके ऊपर गाने लिखे जाते हैं, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए. राइट. सो sunrise and sunset appear in the sky because the earth is moving around its own axis. ये हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है. तब हमें समझ आता है कि हाँ हाँ, पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूम रही है. उसके कारण सूर्योदय और सूर्यास्त हमें प्रतीत हो रहा है. ये हमें समझ आ गया, ये हमने सीख लिया स्कूल में. अगले दिन से दिखाई कैसे देगा? हाउ विल दैट फिनोमिनन अपीयर द डे आफ्टर वी हैव स्टडीड दिस इन द क्लास एंड वी हैव अंडरस्टूड इट? हाउ विल इट अपीयर? It will continue to appear the way it used to appear yesterday. There's no change at all. So even when we understand an illusion to be an illusion, the illusion keeps appearing as it was earlier, except our perspective, our perception, our understanding has changed. Therefore, we are no longer assuming it to be as it is or as it appears. That's what happens. तो जगत का अनुभव हमें उसके संवेदनाओं के मार्फत होता है, और उन संवेदनाओं का जो प्रतिबिंब है जगत में, उसको हम सत्य मानते हैं. बाहर का जो जगत है उसको हम जैसा है वैसा अनुभव नहीं कर सकते. उसको हम केवल 5 संवेदनाओं के मार्फत अनुभव कर सकते हैं. सो वी कैन ओनली एक्सपीरियंस द वर्ल्ड एज सेंसेशंस unless those sensations happen within our mind. The world outside does not exist for us. Guess what? We have only our experience of the world. We don't have anybody else's experience of the world. मुझे इस जगत का अनुभव मेरे मन में जिन संवेदनाओं के मार्फत हुआ है, केवल वही हुआ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है. I have not experienced the world the way you have experienced the world. I have experienced the world only the way I have experienced the world, through the sensations I have experienced in the past. ये बहुत फंडामेंटल है, बहुत फंडामेंटल है. ऐसा है कि हम सभी को एक सामान्य अनुभव होता है जगत का. वी हैव ए कॉमन एक्सपीरियंस द वर्ल्ड. सिंस वी ऑल हैव दैट कॉमन एक्सपीरियंस, we all assume and think that the outside world is real. The outside world is of course real only as long as we are awake. The experience of the outside world completely disappears when we go to sleep every night. Now you tell me, if a certain experience appears
only in a certain set of circumstances, and it disappears in certain. I think we lost the internet momentarily, and therefore, whatever I was saying was probably not recorded. So, we were talking about how this world disappears when we are asleep. So, anything that appears in a certain set of circumstances and disappears in another set of circumstances, that experience cannot be considered as completely real because it appears only in a certain set of circumstances. It disappears in our experience. Forget about everybody else's experience. We don't have other people's experience. We have only our own experience. So we experience this world as sensations when our sense organs are active and our mind is capable of accepting those sensations through the sense organs and create certain impressions. तभी हमें इस जगत का अनुभव होता है, नहीं तो नहीं होता है. और हमारे मन में जो संवेदनाएं होती हैं, the sensations we have in our own mind, they correspond with the outside world. तो हमारे मन में होने वाली संवेदना और बाहर का जगत, इन दोनों में कोरिलेशन होता है. सो दैट कोरिलेशन इज कॉमन टू ऑल ऑफ अस. तो मेरे पीछे ये इतना सुंदर चित्र आप देख रहे हो ना, ये सभी को ऐसे ही दिखेगा. सो देर इज अ कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड. दैट experience of the world is based on certain laws. It functions according to certain laws. So anybody and everybody who is even barely intelligent will understand the world functions according to certain laws. ये अगर समझ आ गया तो फिर हम क्या करेंगे कि उन नियमों को हम समझने का प्रयत्न करेंगे और उन नियमों के अनुसार रहने का प्रयत्न करेंगे. हमें ये समझ आता है कि उन नियमों के अनुसार अगर हम हमारा जीवन चलाएंगे तो हमारे जीवन का अनुभव हमें अच्छा होता है, अच्छा लगता है. सो इट इज ऑब्वियस टू अस, it is self-evident to us when we understand the laws of nature and we design our lives according to those laws, our experience of life is better. इसका उदाहरण ऐसा है कि we understand the law of gravity, we understand the law of aerodynamics. उस बेसिस पर हमने हवाई जहाज, विमान डिजाइन किया. उस विमान से हम एक जगह से दूसरी जगह पर तुरंत जा सकते हैं. We can go from one place to another much more quickly than we would have gone if we were walking or bicycling or driving or taking a train. We can go there much quicker if we can fly in an aeroplane. तो ये विमान का जो टेक्नोलॉजी है उसको हमने कैसे डेवलप किया? वी अंडरस्टूड द लॉज ऑफ ग्रेविटी एंड वी अंडरस्टूड द लॉज ऑफ एरोडायनामिक्स. तभी जाकर के तो हमने विमान का शोध किया. We discovered and we invented. We discovered the laws of gravity. We discovered the law of gravity and the law of aerodynamics and we invented the technology based on those laws. तो उस प्रकार से प्रकृति के नियमों को समझने के बाद हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं और उस टेक्नोलॉजी से हमारा जो जीवन है, जो भौतिक जीवन है, वो सुखद हो सकता है. सो वी कैन मेक अवर फिजिकल लाइफ, our day-to-day life much more comfortable if we understand these rules, if we understand the laws of nature, and if we can develop technology based on those laws. There is no doubt about that. Unfortunately, what happens is we are so enamored and ultimately addicted by these conveniences that we get stuck with those and we forget about how we should conduct our lives in accordance with natural laws.
ये हम भूल जाते हैं। अगर हम उस प्रकार से रहेंगे तो अभी हम जो चिंतन कर रहे हैं, या गीता हमें क्या संदेश देना चाहती है, उसको हम समझेंगे। वी विल अंडरस्टैंड एंड वी विल ट्राई टू इंटरनलाइज दैट। गीता का जो अल्टीमेट संदेश है ना, वो संदेश ये है कि यहाँ पर मेरे अपने अवेयरनेस के अलावा कुछ है ही नहीं। ये अल्टीमेट संदेश है। वो ऐसा डायरेक्टली इन शब्दों में शायद नहीं होगा उसमें, किंतु उसमें हमें जो बताया गया है उसका अगर हम चिंतन करेंगे, इफ वी contemplate and dive deeper and deeper and deeper into the message of the Gita, we will realize, other than my awareness, other than my own consciousness, I don't really have any other experience. I have no experience other than my own awareness. क्योंकि ये जगत का जो अनुभव है ना, ये अनुभव भी मुझे मेरे अपने अवेयरनेस में ही सेंसेशंस के मार्फत होता है। I don't experience the world as it is. I experience only sensations in my mind that are triggered by the world outside. So the entire world outside is only a mirror image of the sensations in my own mind. Or in other words, the whole world is a mirror image of my own mind. ये जब मुझे समझ आता है ना, तो instead of trying to change the world to suit me, I try to work on myself. ये उसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है। अगर हमें समझ आएगा कि ये सारा का सारा बाहर का जगत जो है ये मेरे मन का प्रतिबिंब है, तो जगत को सुधारने के बजाय मैं अपना मन शुद्ध करने का प्रयत्न करूंगा। ये जो रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन है, दिस इज व्हाट गीता विल एनकरेज अस टू डू, और दिस इज व्हाट गीता एनकरेज मी टू डू। ऐसा मैंने सोचना चाहिए और ऐसा मैंने कहना चाहिए। सभी को गीता इस प्रकार का चिंतन करने के लिए प्रेरित करेगी, ये शायद ना हो। गीता तो सभी के लिए है। गीता विल इंस्पायर यू टू डू व्हाट यू वुड लाइक टू डू। So if you would like to do karma, then Gita will inspire you to do karma. An entire Gita Rahasya was written by लोकमान्य टिळक। ये गीता का संदेश जो है वो स्वधर्म रूपी कर्म करने का है। ये है गीता का संदेश, कर्म प्रधान। अवश्य लोकमान्य टिळक को जब वो थे और जिस प्रकार का काम कर रहे थे, उस काम के लिए जो प्रेरणा आवश्यक थी वो गीता ने दी। गीता इंस्पायर्ड हिम टू डू what was necessary to be done through him at that time. शंकराचार्य कहेंगे कि गीता gives us the message to realize who we are, to get rid of our ignorance, purely from a knowledge point of view. If you read the version by Prabhupada, Bhagavad Gita as it is, he will say Gita is to realize the godhood of Krishna and be surrendered to it. And all these perspectives are correct. All these perspectives are correct. Depending upon our own nature. Yogi Arvind or someone else who is on the path of yoga will say Gita's message is to become proficient in yoga, discipline our mind, and realize who we are through the path of yoga, through the path of contemplation, through the path of meditation. So there are four major paths in the Gita. One is the path of karma, one is the path of yoga, one is the path of bhakti, and one is the path of knowledge. Whichever one suits us, we can choose depending upon the need, depending upon what we need at any given point in our life, depending upon our own perspective. But ultimately, whether I'm doing karma
whether I am doing yoga, whether I am involved in bhakti. Ultimately, Gita will lead me to realize that there is nothing other than my own awareness or my own consciousness I experience. And this is everybody's common experience. That awareness of our own being is the ultimate truth. If we remain in that awareness, if we remain in that consciousness, that is where ultimate bliss is. It doesn't mean we should remain only in meditation and remain in that bliss and not do things in the world. We must. Each one of us has a body. The body has to be maintained. How? By good food, by good rest, by good proper work, and proper recreation as well. So yuktahara viharasya yukta cheshtasya karmasu yukta swapnavabodhasya yogo bhavati dukkha is a very fundamental shlok in the 6th chapter of the Gita, which guides us on the path of life. जीवन में हम कैसे रहें, उसके लिए ये श्लोक हमारे लिए मार्गदर्शक है. उस प्रकार से हमें रहना है इस जगत में. क्यों? क्योंकि उससे सारे दुखों का नाश हो जाएगा. योगो भवति दुःखः. इस प्रकार से अगर हम रहेंगे तो उस प्रकार से हमारे सारे दुख जो हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे. तो हम जो करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमें दुख ना हो और हमें सुख की प्राप्ति हो. अगर हमें हमारे अपने अवेयरनेस के बारे में बोध हो जाता है और हमें ये बोध हो जाता है कि हमारा जो मैं है, द रियल आई, इज दिस प्योर अवेयरनेस, एंड एवरीथिंग that appears in this awareness as the other is only that, is only an appearance for a brief period of time. It appears and then disappears, appears and disappears. But I never disappear. The real I never disappears. If we can all remain in this I and always be blissful, तो इस ब्लिस में हम हमेशा रहें, यही गीता का संदेश है. तो इतना चिंतन हुआ कॉन्शियसनेस इज ऑल देयर इज के बारे में. दीदी, व्हाट डू यू से? Yeah, that's true. So any comments or questions anyone So has? I Bolo. feel like that it's not just the conscious part is consciousness. It's the unconscious part of ourself um, is also, that thing which is called consciousness. The term consciousness is actually not a complete term to describe everything like that divine, that divinity. I feel like. हाँ, Uh, तो let me contemplate on what you just said. I think I understood what you wanted to say. हमें दो प्रकार के अनुभव होते हैं. See, one experience is conscious experience. In the world especially, we see that there is something that seems to be sentient and another thing that seems to be not sentient. Or even in my awareness, when I'm awake, I'm conscious. But when I'm not awake, then it seems that I'm not conscious. So if I consider myself to be this body and mind, the body and mind essentially shut down during our deep sleep. So it seems to us that we are not conscious during that time. Or if we look at the world, then the world seems to be divided between sentient and non-sentient, चेतन and जड़. पर इन दोनों का जो आधार है, the basis for both
एंड द बेसिस फॉर इवन माय ओन एक्सपीरियंस, वेकिंग एक्सपीरियंस एज वेल एज डीप स्लीप एक्सपीरियंस, उन दोनों का आधार एक ही है। उस आधार पर ही मुझे जागृतावस्था वेकिंग एक्सपीरियंस और निद्रावस्था डीप स्लीप एक्सपीरियंस दोनों का अनुभव होता है। सरस्वती ताई, आपल्याला काहीतरी प्रश्न होता? यू वांटेड टू आस्क समथिंग? या सी, मेरे को समझ में आता है कि कॉन्शियसनेस क्या है। ओके। द थिंग इज, एंड आई अंडरस्टैंड दैट विवेक और वैराग्य ये दोनों चीजें होनी चाहिए लाइफ में, हम्म। but to bring that into my life, having being a householder, how do I uh, make that happen? So that's always the struggle, ग्रेट। because that that struggle is what I don't, that's where I find myself, that the self discipline part that I can work on. I struggle with that also. So forget about, there's three things I need to work on: Vivek and Vairagya, हाँ, and uh, अभ्यास, and कंसिस्टेंसी। the consistency. So करेक्ट, this is, I was talking to you yesterday that I want to discipline my in, because you said ahar shuddhi is so important here. करेक्ट। सो So दैट इज अ ग्रेट क्वेश्चन, इनफैक्ट दैट इज अ ग्रेट topic for contemplation. So why don't we take that topic up in the next contemplation? That would be awesome. So we've already one come to more, almost an hour, end of this hour. So we yes, will take a nice break here and we will try to reconvene on this topic, Vivek, Vairagya and Abhyas, when we yeah. come back. Would that be good? I have just one more thing. You can, we can talk about this next time. Sure. You said that there are three things that we want. One is joy, Mm-hmm. and one is to know. There was third thing. What was it? Swadharma. I'm not sure. I don't remember. One is joy, the one was to know, and the third was to always be, to exist. Always be right. That I am. Yeah, So the part that know is to me a little vague. What is it that I want to know? You know, because correct. इसके बारे on में the भी one बात करेंगे, side, so that would be another topic for conversation, correct? yeah, because on the one side we say that we want to empty ourselves Mm-hmm. in order to experience that consciousness. But if you want to know, that goes against what I'm trying to do. So yeah. Sure. So we'll take that up as another topic of conversation. So देखते हैं, ठीक है ना? Oh, okay. तो आज के लिए Thank हम you. लोग यहीं रुकते हैं. You're most welcome. It's been great chatting with you and contemplating with you. So thank you for spending the last 1 hour with me. We'll meet again soon. Namaste.